The last search that we are going to discuss in this series, in this week's video, is what we call uniform cost search. The uniform cost search is slightly different from both breadth first search, depth first search, or IDS that we have seen so far. The idea is that we have seen that neither breadth first search nor depth first search nor IDS, iterative deepening search, takes into account the actual path cost. So they do not consider the path cost. They consider that every action has the same cost, and they always find the shallowest solution and not the cheapest solution. But sometimes it is not enough. For example, कि अगर आपको अगर आप कराची में मौजूद हैं और अगर आपको लेट्स सपोज गुलशन से या फिर पाकिस्तान एग्जाम्पल लें, अगर आप कराची से लाहौर जाना है तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च कोशिश ये करेंगे जनाब कि आपको ऐसा सोल्यूशन लेके जाएं जिसमें कम से कम मिडिल स्टॉप्स आए, कम से कम स्टॉप्स को क्रॉस ओवर करते हुए आप कराची से लाहौर पहुंच जाएं, चाहे वो सोल्यूशन एक्सपेंसिव हो चाहे ना हो. फॉर एग्जांपल कि अगर एक मोटरवे है जो कराची से लाहौर डायरेक्ट कनेक्ट कर रही है, लेट्स सपोज कि उसका डिस्टेंस है 1000 किलोमीटर सपोज कर लें, तो बेथ और वो डायरेक्टली कनेक्ट करी कराची को लाहौर को, तो जनाब वो हमेशा डेप्थ फर्स्ट सर्च या ब्रेथ फर्स्ट सर्च आपको वही सोल्यूशन ला के देंगे जनाब, गो टू कराची टू लाहौर फॉलोइंग दिस सिंगल नोड, या ब्रेथ फर्स्ट सर्च और आईडीएस, सॉरी नॉट डेप्थ फर्स्ट सर्च नेसेसरी. However, मे बी अगर मेरा मकसद डायरेक्ट टाइम बचाना नहीं बल्कि मेरा मकसद पेट्रोल बचाना था, तो आई वांट अ सोल्यूशन दैट वाज the best in terms of the kilometerage that was spent on traveling. तो मे बी अगर मैं कराची से हैदराबाद जाता, फिर हैदराबाद से कुछ और शहरों को ट्रैवर्स करते हुए लाहौर पहुंचता, तो मैं मे बी आई वुड हैव रीच्ड लाहौर इन अबाउट 800 किलोमीटर्स. ठीक है, तो दिस वुड हैव बीन मे बी अ बिट चीपर as compared to the path that was found by BFS. Okay, so we sometimes we want the cheapest solution and not the shallowest solution वाला जो सबसे ऊपर है, तो सबसे जल्दी मिल जाएगा इनिशियल नोट से पहुंचते. ठीक है, तो जनाब हम क्या करेंगे, सिंपली छोटी सी मॉडिफिकेशन करेंगे बीएफएस के अंदर. और मॉडिफिकेशन क्या होगी, हम प्रायोरिटाइज करेंगे जनाब कॉस्ट से ना कि डेप्थ से. तो याद रखिएगा जनाब कि फीफो क्यू जो है वो डेप्थ वाइज प्रायोरिटी को मेंटेन करते हैं. जो सबसे ऊपर है उसकी प्रायोरिटी सबसे हाई है, जो सबसे नीचे उसकी प्रायोरिटी सबसे कम है. मगर अब हम क्या करेंगे, मॉडिफाई कर लेंगे. हम देखेंगे जनाब कि जो नोड सबसे कम फासले में पहुंची जा सकती है वो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है उसकी. तो सबसे पहले वो नोड ओपन करी जाएगी जिसकी कॉस्ट जो है वो सबसे ज्यादा कम होगी इस कंपेयर टू जो सबसे ज्यादा पहले एक्सप्लोर करी गई या फिर डिस्कवर करी गई. तो अगेन वी विल एक्सप्लोर यूजिंग द इंक्रीजिंग कॉस्ट. तो अगेन यू कैन सी जनाब के द ओनली डिफरेंस यू विल सी ओवर हियर कि जनाब के फर्स्ट थिंग कि हमारे पास एक प्रायोरिटी क्यू है which is which will maintain the cost according to a particular cost path cost के हवाले से. और अदर थिंग यू विल सी ओवर हियर कि अगर नेबर आपका फ्रंटियर में मौजूद है, ठीक है, तो क्या करेंगे जनाब कि आप उसकी की को डिक्रीज कर देंगे, यानी कि यू विल डिक्रीज द. अगेन आई विल रिकमेंड कि आपने मे बी आप यू हैव हर्ड अबाउट द हीप सॉर्ट, so you should go and explore the decrease key function जो कि यहाँ पे इसको यूज करा जा रहा है. So let's take an example. For example मुझे कराची से सक्कर जाना था, तो this is my initial state and let's suppose जनाब कि this is my goal state. So if you run BFS, so which node you will find first? So let's take an example. So if I start with Karachi, I will have two options, Hyderabad and Khustar, and then from Hyderabad I can go to Hala, and from Khustar I will go to Sakkar, and we will find a solution. This is going to be our solution, and the cost will be 390 plus 324. The cost is 714 kilometers, okay. This is the path that has been found by the BFS. Okay, BFS. But uniform cost का सर्च क्या करेगा जनाब कि it will not work like this. So I will remove the path found out by. So look at this follows. So let's suppose जनाब you will start with Karachi
You will have two options, Hyderabad and Khustar. So you will see जनाब के हैदराबाद की कॉस्ट कितनी है is 164 and खुजार की कॉस्ट कितनी है 390. So we'll open up this node first because the cost कम है इसकी cost. So you will open up this node, then हाला की कॉस्ट कितनी है? हाला की कॉस्ट हैदराबाद से 64 है, बट we traveled from कराची, तो कराची से हैदराबाद हाला की क्या होगी 164 plus 64, then the cost is 164 plus 64 is 228. And then the next node that will use is open is still hala because hala costs you 28 as compared to Khuzdar जो कि 390 है. Then I will go from hala to Moro and the cost is 228 plus 114 is 342. Now still Moro is still cheaper than Khuzdar, and I will open up this node, and the node that will I open will be Sakhar, and 342 plus 160 is about 502. Okay, but you can see जनाब Khuzdar is the next because Khuzdar has lowest cost, so I will open 390 and 390 and I will go to Sakhar. Sakhar की cost कितनी है जनाब? Sakhar की cost जो है 324, 390 plus 324 is 614. Okay, but you can see जनाब के Sakhar अगर मैं यहाँ से जाऊँ कराची खुजदार Sakhar, then the cost is 614 and but the इसकी cost कम आ रही है इस वाली नोट की, then this is going to be our goal node. Why? Because इसकी cost कम है. Then the node that I have been found, the goal it is this path. जो path मिला वही जो कि the cheapest solution as compared to the shallowest solution. So this solution Khuzdar Sakhar is shallow. It will be found by BFS. Karachi to Sakhar via Hyderabad and Hala and Moro is longer but cheaper. So this is the solution that will be found out by the UCS algorithm. Okay, I hope you understand the difference between UCS and breadth first search. So UCS is complete अगर आपकी cost finite है. If there is infinite cost, then this is not complete. Then C static will be your cost of the optimal solution. Every action कम से कम epsilon है, then the effective depth is about C static divided by the epsilon, and the total number of nodes that you will expand is about B to the power C static divided by epsilon. I'm not going to go into the proof right now. We're going to talk about the proof of this uniform cost search as well as some other algorithms in the next week's lecture. So the number of nodes are relatively less as compared to BFS. It is optimal because it will always find the solution that is the cheapest as compared to the solution that is the shallowest. Okay. So again, how do you implement this thing? It's simple. So you use a heap or a priority queue to implement the fringe node. So again, so you can see Janab, if we are starting over here, then we always move into contours. So again, we will explore all the nodes that have the lowest cost and all the nodes that have the lowest cost, more cost, and then so on. So eventually we will find the solution. Okay. So again, this is something that is because we do not have any information about the goal, so we have to move into every direction. This is a disadvantage of uniform cost search, and we are going to address this disadvantage in next week's lecture when we talk about the informed search algorithm. One last thing before we end up the search topic is bidirectional searches. And bidirectional searches is basically we start from both the initial node and the goal node. So एक हम सर्च चलाते हैं initial node से जो कि गोल की तरफ जा रही होती है, और एक हम एक सर्च चलाते हैं जनाब गोल नोड से जो कि वापस initial node की तरफ जा रही होती है. एंड द आइडिया है जनाब के जहाँ पे दोनों सर्च मीट कर जाएंगी वहाँ पे हमें सोल्यूशन मिल जाएगा. नाउ दिस इज समथिंग दैट इज implemented not that often, but something that some idea that you can take home with. So there's some हमसे bidirectional search तब apply कर सकते हैं जब हम गोल से वापस मूव हो सकें towards the initial state, and initial state से मूव कर सकें गोल से. initial state से मूव कर सकते हैं हमेशा, but हर दफ़ा हम गोल state से initial state तक नहीं जा सकते because some operators are irreversible. कुछ operators ऐसे होते हैं जिनका आप वापस जो है वो नहीं आ सकते. This is something that is not very describable. For example, कि अगर आप checkmate हुई है आपको chess में, that's why necessary it's not easy to move from checkmate to the initial state. किस तरह से checkmate जो है वो ही होगी, ठीक है. However, अगर आप compare करें different search strategies को, this is the table for your if you want to look into different search strategies, and no such strategy is good or bad. It also depends upon the context in which they are applied and how they are applied. तो उस context के अंदर जनाब इसको रहते हुए हम इसको good या bad देखेंगे, ठीक है.
Chalo, Janab. So let's look at an exercise and see whether you can figure out which nodes are explored. Okay. So let's look at an exercise in the next video.